Chapter 19, Planning and Preparation. Last chapter was about how to write a report. There was front matter, middle matter, and the end matter in a research report or in a business report. And there's a bibliography as well if the report exceeds approximately 30 to 40 pages in length. So ये planning and preparation में क्या क्या चीजें शामिल हैं? Let's see in chapter 19. To enable the learner understand clearly the difference between the sources and methods of collecting data and to help him acquire the ability to collect, evaluate, organize and present the data in a business और टेक्निकल रिपोर्ट. किसी बिजनेस या टेक्निकल रिपोर्ट में आपको जो डेटा गैदर करना है उसकी टेक्निकलिटीज जो है वो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में शामिल होती है. इफ यू आर beginning to work on a report, you need to gather data and data collection is something which is technical. आप नॉर्मल रिपोर्ट भी जब लिखते हैं कोई या नॉर्मल रिसर्च प्रोजेक्ट जब आप करते हैं उसमें भी डेटा करना एक स्किल है. अगर कोई हिस्टोरियन है तो हिस्टोरियन को आर्काइव्स में जाना पड़ता है, उसको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखना पड़ता है और उसकी भी मुख्तलिफ टेक्निक्स है जिसके मुताबिक चलना पड़ता है. अगर आप बिजनेस की कोई रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं तो there are certain plannings and preparations that are required to collect data, evaluate, organize and present the data in a business or technical report. What is it about? Let's see. Communication code. In this chapter, organized and correct planning results in a well-planned report. The first step is to understand clearly the purpose and scope of the report as well as to identify its audience. The next step is to collect authentic data from reliable sources through an appropriate method and to organize the matter after evaluation logically in the conventional framework. The last step is to prepare an outline according to the principles of sequencing and categorization. These steps, if taken properly, would lead to writing of an effective report. यानी रिपोर्ट जब लिखनी हो तो उसके लिए अगर आप पहले वाले तमाम प्रोसेसेस को प्रॉपर्ली फुलफिल करेंगे तब जाके रिपोर्ट अच्छी लिखी जाएगी. अगर आप फुलफिल करते हैं, एक रिसर्च मास्टर्स करते हैं, you are only able to do your project if you know the skills, if you know the protocols of writing a good research report. Only then you can write a good research report. If you don't know the protocols, the methodology, your process will be lacking. An effective report is the result of careful preparation and execution of the plan. A thorough preparation will save your time and make the writing of the report easier. A thorough preparation, यानी पहले का काम अगर आपने पूरा किया हो तो आपकी रिपोर्ट अच्छी लिखी जाएगी. For example, लोग रिसर्च करते हैं मास्टर्स की, बीएस की, एमफिल की और पीएचडी की. उस तरह जो लोग रिसर्च ट्रेन नहीं होते, जिनको नहीं पता होता कि रिसर्च करनी कैसे है, no matter how intelligent they are, no matter how well read they are, they often struggle to fulfill those steps that are actually required to write a final thesis. और इसी वजह से वो कोर्स वर्क कर लेते हैं एक साल का, लेकिन एक साल की थीसिस राइटिंग की फेज में they struggle. Here, in business writing as well, if you do not know how to gather data, how to organize data, and how to plan a research report or a business report, you will struggle. Here, preparatory steps about writing a research. An effective report is the result of careful preparation and execution of the plan. आपके पास एक प्लान बहुत जरूरी है. जिस तरह रिसर्च से पहले आपसे एक रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है, जो कि रिसर्च रिपोर्ट अगर आपने 100 सफ़ों की लिखनी है तो रिसर्च प्रपोजल आपसे 5 सफ़ों का लिया जाएगा. जिस तरह मैंने लास्ट टाइम का जिक्र किया कि लास्ट वीक में बिजी था, तो आई वाज वर्किंग ऑन माय पोस्ट डॉक्टोरल प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट जो मैंने 10 माह में करना है उसमें मैंने कुछ 7 या 8 सफ़ों की एक पहले प्रपोजल फॉर्म में रिपोर्ट तैयार की कि दिस इज माय प्लान. इफ आई हैव द प्लान इन माय हैंड, ओनली देन आई एम एबल टू राइट माय एंटायर प्रोजेक्ट. जिस तरह आपने कोई घर बनाना हो 20 मरला या 15 मरला या 10 मरला या 5 मरला जगह में, तो आपके पास पहले प्लान होना जरूरी है. ऐसा नहीं हो सकता आप ईंटें इकट्ठी कर रहे हैं और वहां पे बगैर प्लान के घर बनाना शुरू कर दें, तो आखिर में एन मुमकिन है कि आपने जहाँ पे किचन बनाना है वहां पे आपने सारे टॉयलेट छोड़े हों. तो इस तरह आप स्ट्रगल कर सकते हैं. Similarly, in research writing or in report writing, you need to have a plan in place before you execute it in the form of a full-fledged report. An effective report is the result of careful preparation and execution of the plan. A thorough preparation will save your time and make the writing of the report easier. It will help you keep your objective in view and realize it
effectively. Preparatory steps. The following are important preparatory steps to writing a report. Number one, define the purpose and scope. अपनी रिपोर्ट का पर्पस क्या है, किस वजह से आप रिपोर्ट लिख रहे हैं और उसका स्कोप क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है. 2, determine the audience. किसके लिए लिख रहे हैं आप ये रिपोर्ट? Is this report for some ministry, let's say Ministry of Finance? Is this report for media? Is this report for some newspaper? Or is this report for some teacher or a university? So you need to know your audience. Who are your audience? To whom are you actually presenting your report? Number 3, collect the data. Data collection, very important. Once you start working on your report, first you have to be in the field. Collect data. अगर आप पंजाब फूड अथॉरिटी से हो तो आपने एक रिपोर्ट बनानी है तो आपको जगह जगह देखना होगा कि जितनी दूध की शॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने वहां पे एडल्ट्रेशन देखनी है कि मिक्सिंग कहाँ पे हो रही, तो आपको जगह जगह इलाके इलाके को एनसर्कल करना पड़ेगा और वहां पे दूध की शॉप्स देखनी पड़ेंगी. इसके साथ साथ आपको हलवाइयों के पास जाना पड़ेगा, गंदा कुकिंग ऑयल चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है. दिस इज कलेक्शन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग. और उसके बेस पे जब आप इकट्ठा कर लोगे डेटा, फिर आप उसको गैदर करके ऑर्गेनाइज करोगे कि भाई ये इस इलाके का डेटा, ये इस इलाके का डेटा, ये इस इलाके का डेटा. ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड द ट्रेंड्स यू विल एक्चुअली मेक एन आउटलाइन. के बाद आखिर में क्या करेंगे आप? ऑर्गेनाइज द मटेरियल, मेक एन आउटलाइन कि भाई ये आपने डेटा कलेक्ट किया और फिर आपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं. इलामा इकबाल टाउन के सैंपल ये, मुस्लिम टाउन के सैंपल्स ये, इचरा के सैंपल्स ये, समनाबाद के सैंपल्स ये, जौहर टाउन के सैंपल्स ये, गुलबर्ग के और उसके साथ साथ बागवानपुरा एटसेट्रा के ये. एंड देन मेक एन आउटलाइन अबाउट योर प्रोजेक्ट. डेटा गैदर हो गया. यानी लोग अक्सर कहते हैं कि भाई अब मेरा पीएचडी का लिखने वाला काम हो गया, मैंने डेटा सारा इकट्ठा कर लिया, यानी लिटरेचर सारा पढ़ लिया और अब मैंने सिर्फ उसको अपने लफ्जों में परोना है जो मैंने गैदर किया. सिमिलर reports, you gather data and finally you prepare an outline of how and what are you actually going to write in your report. Defining the purpose and scope. Reports are produced in response to specific demands. जिस तरह मैंने कहा शुरू में कि अगर आप पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से हो तो फूड अथॉरिटी एक मखसूस डिमांड के अगेंस्ट काम करती है. वो डिमांड ये कि माशरे में साफ सुथरी फूड जो है या सोसाइटीज में साफ सुथरी फूड आइटम्स जो है उनको इंश्योर किया जाए. और उस डिमांड के लिए वो वाले वेन्यूज डिसाइड करेंगे जहाँ पे साफ सुथरी फूड नहीं दस्तयाब, ताकि उनको बंद किया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि अब यहाँ पे एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन ना हो. The reports are produced in response to specific demands. और ये फूड अथॉरिटी की एग्जांपल है. दूसरी रिपोर्ट हो सकती है कि क्राइम से रिलेटेड, कि क्राइम के हॉट बेड्स जो हैं उनको पहले इकट्ठा किया जाए कि भाई कहाँ पे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट्स हो रही है, और थानों के चक्कर लगाए जाए, देखा जाए कि कहाँ पे ज्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, साइल कहाँ आके ज्यादा बैठ रहे हैं, देखा जाए इलाकों में जाके कि ग्रीवेंसेस कहाँ पे है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड जस्टिस, एंड से कि भाई हमारी रिपोर्ट की रोशनी में ये एक्शन लिया जाए. और रिपोर्ट्स पर बेसिकली लेजिस्लेशन के काम भी आते हैं बाद में. वेरी ऑफन you have clear instructions which are generally called terms of reference that tell you what you are required to do. For example, the terms of reference of the Committee on Foreign Collaboration appointed by the Government of India, Ministry of Industrial Development and Company Affairs were as follows. To examine, number A, to examine the extent to which at the present stage of our economic development, import of technical know-how from abroad can be dispensed with. Number B, to examine the general conditions subject to which indigenous know-how can be deemed to be capable of commercial exploitation. And number C, to suggest general guidelines regarding the type of cases in which foreign collaboration may be allowed. इसको आप skip कर दें, basically थोड़ा सा technical है ये चीजें, because this is about economic development and company affairs, etc., etc. Though the terms of reference will guide you in your job before you actually begin to collect data. Terms of reference ये है कि भी आपको initial instructions बताती है कि भी इसकी रोशनी में आपने data gather करना है. It is advisable to spend some time in working out the exact scope of your report. So though
the terms of reference will guide you in your job before you actually begin to collect data. It is advisable to spend some time in working out the exact scope of your report. If the instructions are woolly, you should seek clarification before making a start. Woolly से मुराद होता है जो क्या कहना चाहिए, वो जो गोले की तरह जो गुत्था हुआ हो कोई चीज, जिस तरह सिलाई करने वाली ऊन होती है, वो एक दूसरे में गुमसुम हुई हो. वूली से ये मुराद होता है कि जो चीज क्लियर ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो. So if the instructions are woolly and complicated, you should seek clarification before making a start. जिस तरह अक्सर औकात हमारा ये हेडसेट जब हम जेब से निकालते हैं तो एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हुआ होता है. तो अगर इंस्ट्रक्शंस भी गुत्थम गुत्था हो और क्लियर ना हो, you should seek clarification before making a start. A false start invariably results in waste of time, energy, money and ideas. जिस तरह आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में फॉल्स नेगेटिव लेके गई और अक्सर वहां पे पॉजिटिव निकल आए गवर्नमेंट. Often you will be required to write reports at very short notice. You may, for example, be instructed to prepare a report on the sales of your company's products during the first quarter of the financial year. A piece of information urgently required for meeting of the heads of your department next morning. In such a case, you are not expected to produce a detailed report. You need and arrange and present them in meaningful form. And on another occasion, you may head a committee which is assigned the task of finding out the cases of a fall in the sales of a product of your company and to suggest measures to boost the sales. कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसकी सेल्स कम हो गई हैं. हर कंपनी जो है उसी वक्त काम करती है जब उसकी सेल्स या प्रॉफिट ज्यादा हो. अगर वो प्रॉफिट कम हो, सेल्स कम हो जाए तो उनके लिए परेशानी का बायस बन जाता है. और अगर तनख्वाहें ज्यादा दे रहे हैं और प्रॉफिट कम हो तो उनको कंपनी बंद करनी पड़ती है. तो अगर ऐसे केस में रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाए कि आप हमें रिपोर्ट लिख के दें कि किस वजह से हमारी सेल्स कम हो रही है, तो वो उस केस में फिर रिपोर्ट मांगी जाती है कि भाई जस्ट टू कंफर्म व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड fall in sale within a certain company, measures to boost the sale. In this case, you will be given enough time and clear instructions about the nature and extent of the coverage. You will gather detailed information from distributors, retailers, and also perhaps conduct a sample survey of consumer reaction and write a comprehensive report on the basis of the data collected from these sources. There are many reports of a routine nature, that is to say annual financial reports, quarterly reports on purchases and sales. Purchases nahi hai, purchases is actual word. So there are many reports of a routine nature, for example, annual financial reports, quarterly reports on purchases and sales, reports on feasibility of establishing a branch in a town. So ye dekhne ke liye. There will therefore be models of such reports available in the organization you belong to. For example, अगर Cakes and Bakes लाहौर में मौजूद है और बड़ी सक्सेसफुल चल रही है और उनका प्रॉफिट भी ठीक चल रहा है, तो फिजिबिलिटी मांगी जा सकती है कि हम मुल्तान में भी केक्स एंड बेक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए मार्केट में हमें चेक करना है कि क्या feasibility है, how successful will it be, what kind of a response we might get. तो इसमें कल्चरल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट सारों को देखा जाएगा कि वहां पे इस तरह के स्टोर्स पहले मौजूद हैं, अगर नहीं है तो उसका क्या स्कोप है. This is feasibility report. For distribution retailers, and also perhaps conduct a sample survey of consumer reaction and write a comprehensive report on the basis of the data collected from these resources. अक्सर feedback forms लिए जाते हैं और उसकी बेस के ऊपर रिपोर्ट भी तैयार की जाती है कि most of the consumers are thinking on these lines about certain products. There are many reports of a routine nature, that is annual financial reports, quarterly reports on purchases and sales, reports on feasibility of establishing a branch in a town, etc. There will therefore be models of such reports available in the organization you belong to. It is helpful to make use of these models and to follow them. Determining the audience. आपको रिपोर्ट लिखने से पहले ऑडियंस देखनी कि किस ऑडियंस के लिए आप रिपोर्ट लिख रहे हैं. A report is always written with an audience in mind. कि किसके लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं. The term of reference very often make it clear who will read your report. In some cases, it may be just your immediate boss who needs information on some aspects of work with which you are connected. At another time, it may be a number of readers to whom your report will be circulated. Generally speaking,
you'll find that your report has any of the following 6 kinds of audience. Number 1, superior officers. आपके boss ने आपको कहा report लिखने के लिए. Number 2, colleagues and counterparts in other organizations. किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे रिपोर्ट मांगी है कि भी हमें जरा रिपोर्ट दें ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टैली करें इसको. Number 3, subordinates employees. कि आप अपने subordinates ने आपको कहा है कि सर हमें जरा एक रिपोर्ट दे दें ताकि उसकी रोशनी में हम अपने वर्क को इम्प्रूव कर लें. Number 4, other organizations engaged in similar activities. कोई फैब्रिक कंपनी है वो किसी और फैब्रिक बनाने वालों से राब्ता करें, उनसे कहें कि हमें एक रिपोर्ट चाहिए. Number 5, shareholders. Number 6, customers and members of the public. आपने लिखनी है रिपोर्ट किसके लिए, कस्टमर्स के लिए और मेंबर्स ऑफ पब्लिक के लिए. तो उस केस में फिर आप अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं. नंबर 8, गवर्नमेंट एजेंसीज. अगर आपने गवर्नमेंट एजेंसीज को ध्यान में रख के रिपोर्ट लिखनी है तो आपको एक्सपेक्ट करना है कि अगर आपने रिपोर्ट में खामियों या कमियों का जिक्र किया तो गवर्नमेंट में कॉम्पनसेट यू फॉर दैट एंड गिव यू सम स्पॉन्सर्स और फंड्स. If your report is based on instructions from an individual, it would not be difficult to figure out its objective. If, however, the audience is large and varied, you should find out carefully that what they know and what they do not know. The difference in their training, experience, and background should determine the presentation style of your report. To overcome the difficulty of catering to the needs of a varied readership, keep in view the people who are farthest in knowledge from the subject of your report. For example, if you are a sales representative and your report is going to be read by the sales officer, the chief sales executives and the managing director, you should keep in view the managing director while writing. The sales officers and the chief sales executive are expected to have background information about what you write. अगर आप experts के लिए लिख रहे हैं तो आपकी writing में experts की terminologies होनी चाहिए. अगर आप commoners या आम लोगों के लिए लिख रहे हैं तो आपको simplistic language use करनी है. Remember that a report is a piece of communication and can be considered successful only if it produces in the reader the desired response. One way of testing this is to place yourself in the position of the reader and then examine the effect it produces. In this respect, you should make an attempt to emulate a good salesman. What does he do? He looks at things from the customer's point of view by placing himself in this position. This is a difficult task, no doubt, and requires a lot of patience and flexibility of approach. When you do this, you may well find that you have to add quite a few details to complete the picture or to discard a lot of material you wish you so assiduously collected after spending hours of valuable time. But then it is part of the report writing game to have the courage to do so when you discover that it would add to the effectiveness of the report. Collecting data. Most important thing about writing a report is collecting data. कैसा data, कहाँ से data और किस तरीके से data gather करना है. After the purpose and scope have been specified and the audience determined, the next step is to gather the relevant data. Before you set about this task, you must know the various methods of collecting information and the sources from which you can gather the relevant information. Many reports turn out to be ineffective because the writer did not use the proper method, consult the right documents, approach the right people, or secure the right answers. Let this not happen to you. Recognition of sources of information and culling the relevant data are essential for writing a good report. Good report लिखने के लिए आपको relevant data तक पहुंचना बहुत जरूरी है. If I remember my PhD, if I met people from other disciplines like public administration, history, political science, psychology, religious studies, all had their own respective methodology of gathering data. मेरा चूंकि लिटरेचर से ताल्लुक था तो मैंने लाइब्रेरियों और इंटरनेट पे मौजूद जर्नल आर्टिकल्स तक इत्तेफाक किया. I didn't have to go to national archives or museums etc. मेरी सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरियों से ही रिपोर्ट जो या थीसिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई थी. I didn't have to consult too many organized spaces like museums or archives. लेकिन हिस्ट्री के लोगों को अपना डेटा गैदर करने के लिए या अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए
archives का चक्कर लगाना पड़ता है. So that's why method is very important. What kind of method are you using? There are a number of methods and sources for collecting data. Choose the ones relevant to your purpose. We may place them into the following categories. Number A method. Number one, personal observation. आपकी personal observations, आप फील्ड के अंदर विजिट करते हैं तो लोगों से मिलने के बाद आप उनके एक्सप्रेशंस या उनको आप अगर सर्वे करते हैं उनका या उनको क्वेश्चनर देते हैं तो उसके बेस के ऊपर भी आप कर सकते हैं. नंबर टू, टेलीफोन इंटरव्यूज. कहीं नहीं जाते हैं, मखसूस लोगों को चूज करके आप उनको टेलीफोन पे बात करके उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं. नंबर थ्री, पर्सनल इंटरव्यू. आप किसी के पास जाके टाइम लेके उसके पास सोफे पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो वो पर्सनल इंटरव्यू. नंबर फोर, क्वेश्चनर्स, कि भी आप लोगों को हाथों में मखसूस सवालों का एक प्लेट बना के देते हैं और उसकी बेस पे ट्रेंड्स एसरटेन करते हैं, अपने टेम्पलेट्स या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सवाल करते हैं. तो पहली चीज है पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, कि आप सोसाइटी में फिरते हैं और ऑब्जर्व करते हैं चीजों को और उसकी बेस पे आप रिपोर्ट गैदर करके बनाते हैं. दूसरा है टेलीफोन इंटरव्यू, तीसरा पर्सनल इंटरव्यू, चौथा क्वेश्चनर्स. हमारे पीयू में नॉन लिटरेचर डिपार्टमेंट से अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं जो कि क्वेश्चनर्स लेके आके हमसे फिल करवाते हैं और उसकी बेस पे अपना थीसिस लिख देते हैं. दैट्स वन ऑफ द मेथड्स ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट और अ थीसिस. नंबर बी, सोर्सेस. दूसरा तरीका है सोर्सेस. सोर्सेस में क्या चीजें शामिल हैं? नंबर वन, इंटरनल रिकॉर्ड्स. इंटरनल रिकॉर्ड से ये मुराद है कि अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और उससे रिलेटेड को रिपोर्ट लिखनी है तो उसका अपना अंदरूनी रिकॉर्ड जो है वो आपका सबसे पहला मेन सोर्स ऑफ डेटा होगा. सेकेंडली, libraries contain published manuscripts, books, journal articles, etc. So libraries are fantastic venues to gather data. And number three, internet आज के दौर में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. इससे लोग असाइनमेंट भी लिखते हैं कट कॉपी पेस्ट करके और इसके जरिए लोग बहुत वर्थवाइल इंफॉर्मेशन भी लेते हैं. आजकल न्यूज का सोर्स, मैं अपने बचपन में न्यूज का सोर्स टीवी को या अखबार को समझता था, लेकिन since 2008 and 9 both of these sources are no more the prime sources of information for me. Now social media, and on social media Facebook, not just those headlines or breaking news are available on the timeline, but memes are also excellent sources of information and gossip and discussions. So internet is a fantastic source to gather data for writing of your research as well. And on internet you find published newspaper articles, journal articles, and important websites as well, and encyclopedia articles are also there. So if you want to do anything, Google is the source. Sometimes, or rather, these websites like Uber and Careem also are so useful for would-be drivers who do not know the routes to different territories, but they use Google and get the information about where to go. Then methods of collecting data. डेटा गैदर करने के तरीके क्या हैं? इंटरनेट तो आपके पास है, लेकिन इंटरनेट पे लिखना क्या और कैसे गैदर करना है? लाइब्रेरी तो आप चले गए, लेकिन लाइब्रेरी से डेटा कहाँ से और कैसे कलेक्ट करना है? हम इस दौर में, मैं हालांकि पीयू का एक फैकल्टी मेंबर हूँ, लेकिन पीयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में मेरा शायद 2 या 3 बार चक्कर लगा है जब से मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है 6 साल हो गए, लेकिन 2, 3 या 4 बार मेरा ख्याल में ज्यादा गया हूँगा. आई डोंट डैम नो वेयर द इंग्लिश सेक्शन इज, वेयर फ्रॉम आई कैन गेट relevant books, because I don't need to go to the library. Library is though very classical aside for data, but internet is sufficing all my needs. I can download important new books, read them aloud, and download them and stuff. I don't need to go over there. लेकिन अगर आपके पास library as a source of data है तो आपको वहां पे जाना है, कैसे जाना है, क्या कार्ड यूज करना है, कैसे बुक ड्रॉ करनी है, किस तरह लेंडिंग, किस तरह बोरोइंग करनी है, क्या पेनल्टीज हैं, क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा एंड फ्रॉम वेयर एंड व्हिच साइट एंड व्हिच प्लेस are you supposed to get which kind of books. These are the things which are extremely vital as far as
doing your research is concerned. So personal observation, some reports, पहली चीज methods में चार चीजें थी कि methods. Number one, personal observation. Personal observation, some reports will be based on your personal observation. For example, you may be required to write a report on an experiment you conducted in the laboratory, a job you performed on an event to which you were an eyewitness. Since in these cases, आपसे पूछा जा सकता है कि आपने ऑरेंज लाइन मेट्रो जो है उस पर सफर किया, एक महीना सफर किया, तो उसकी बेस पे और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे आपने एक रिपोर्ट लिखनी है कि हाउ far and how much has this new mode of transportation in the city, or public transportation in the city, has it actually benefited the common citizens of the city. आपने इसके ऊपर लिखनी रिपोर्ट और ये बेस होगी आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे. आपने उस वक्त भी शहर में सफर किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब ये नई ट्रेन सर्विस मौजूद नहीं थी या मेट्रो मौजूद नहीं थी, एंड आपने अब भी सफर किया, तो ये आपकी जो रिपोर्ट होगी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगी. Since in these cases you will have to rely solely on your sensory perception and memory, you must develop the habits of careful observation. क्योंकि आपके आंखों देखा और सुनते देखती आंखों और सुनते कानों वाला हिसाब किताब होगा, इसलिए your observation should be very exact and very honest and accurate recording. Traits which even otherwise are helpful, lest you should be caught unaware. It is advisable to keep a notebook and a pencil ready for jotting down notes. और इसलिए आपके पास हर वक्त नोटबुक या पेंसिल हमें होनी चाहिए ताकि आप जो नई चीज ऑब्जर्व करें उसको लिख लें. Number 2, telephone interviews. Telephonic interviews as well as personal interviews are the other methods of collecting data. आपने टेलीफोन करना है डिग्निटरीज को, उनसे टाइम लेके उनके साथ गुफ्तगू करनी है और उससे आप उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. जिस तरह आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप मेरे से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे और कि भाई सर मुझे आपसे 5 मिनट का एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे टाइम दे दे. मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे दूंगा, आप मुझे कॉल करोगे और मैं तैयार बैठा हूँ कि मेरे से आप सवाल पूछोगे और मैं उसके जवाब दूंगा. So this is how things are done. So this is a method. A small number of people you may contact them on telephone and save time on traveling, but often you may not get as effective a feedback on the telephone as in the case of personal interview. ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आजकल हम पढ़ाई लिखाई वाला काम फेस टू फेस क्लासेस के ना होने की वजह से ऑनलाइन कर रहे हैं, जूम के जरिए कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिए कर रहे हैं या गूगल मीट के जरिए कर रहे हैं, ताकि हम फिजिकल बैरियर या ट्रैवल या सोशल डिस्टेंसिंग या एसओपीज को के इश्यूज की वजह से उसको हम डिजिटल मींस के जरिए फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं. इट मे नॉट बी एज इफेक्टिव as it would be in physical interaction, just like a normal class is different from an online class. Similarly, an interview conducted face to face or in person is different from an interview conducted on telephone. Telephone के ऊपर आपके पास limited time होता है, you are not seeing each other's expressions on the face, plus you are time barred as well. That's why it may not give you an excellent alternative, but it still is one of the means. Further, the information you collect may be unrepresentative because all the people you need to contact may not be on the phone. हो सकता है कि सारे लोग टेलीफोन पे आपको अवेलेबल ना हो, कईयों के बेलें जाती रहें लेकिन वो फोन ना उठाएं. And if some of them are residents of other towns, long distance calls will be necessary, and in that case the method will prove very expensive. अगर कोई न्यूयॉर्क में बैठा है उससे आप कॉल कर रहे हैं, अनलेस कि वो व्हाट्सएप कॉल है फिर तो ठीक है, या स्काइप कॉल है ठीक है, लेकिन अगर आपको टेलीफोन मिलाना पड़ गया तो आपकी कॉल बड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी. एक मिनट के आपको 80-100 रुपए पड़ेंगे, which will be very very expensive. So personal interviewing in an art, interviewing is an art. तीसरी चीज है इंटरव्यू. पहली पर्सनल ऑब्जर्वेशन, दूसरी टेलीफोनिक कॉल्स और तीसरी पर्सनल इंटरव्यूज. पर्सनल इंटरव्यूज करना एक आर्ट है, हर शख्स इंटरव्यू नहीं कर सकता. Sohail Wadaic is a famous interviewer in spite of the fact that his overall personality is not that impressive, but the way he conducts interviews, he has a style of his own. Similarly, this man, the current chairman of Pakistan Television, Naeem Bukhari, he also had an excellent
style of conducting interviews. So this is a skill possessed by only a few. Shahzeb Khanzada का अपना style है, जान निकाल देता है दूसरे बंदे की. So interviewing is an art that demands intelligence, patience, tact and courtesy. और ये Mike Secker जिसने वो सागदार का इंटरव्यू लिया वो तो सबको बताइए. So even though you need one type of data, remember that all individuals cannot be dealt with in identical manner. You need to be shrewd, यानी तेज होना चाहिए आपको, observant, observe करने वाला, and sensitive to the reactions of the person you are interviewing. You should be quick to readjust your approach and attitude to suit each case. हर शख्स का मिजाज एक तरह का नहीं होता. अगर आप हर शख्स के साथ शाहजेब खानज़ादा बन के इंटरव्यू लेंगे या मार्क सेकर बन के इंटरव्यू लेंगे, so it will not be very fair. Some people